पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम सेडोलसम ब्रिज एंजॉय करके फिर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, एक्चुअली थोड़ी नहीं, बहुत सारी ऑफ रोडिंग और पॉट होल्स और मडी रास्तों से गुजर कर एक एफर्ट वाली जर्नी करके फाइनली पहुँचे कहाँ पर? कोला बीच पे। और अगर कोला बीच का एपिसोड आपको देखना हो तो आपको आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। यार ये पानी तो पूरा पीछे तक आ रहा है। हाई टाइड है शायद आज। मैं सोच रही थी उस पत्थर पे बैठ के ड्रोन उड़ाऊंगी, लेकिन बहुत हाई टाइड है। बहुत ज़्यादा हाई टाइड है। और ये है वो फ्रेश वाटर लगून जिसमें मैं कायाक कर रही थी। अच्छा है ना। कोला बीच हम एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए बिकॉज हमारा, जैसे कि मैंने बताया था, साउथ गोवा में आज लास्ट डे है। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू क्विकली लीव फ्रॉम योर एंड हेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच यू विल सून कम टू नो इन दिस वीडियो। और साथ ही आपको बता दूँ कि गोवा की 3-day आइटिनरी और की पूरी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और आगे की डेस्टिनेशन जानने के लिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। Hi guys, this is Cabo de Rama beach, famous for its blue waters. I am at the cliff of Cabo de Rama beach and it is really lovely. I had to do a lot of off-roading first in the morning for Kola beach, but I enjoyed kayaking there and I am all the way along to Cabo de Rama beach with again off-roading to enjoy these blue waters and show you how serene and beautiful this is. So now I'll just get away and give you a glimpse from top and then we will be going down. तो गाइस यहाँ पर जितने भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं ना, सबके लिए आपको थोड़ा बहुत तो चढ़ना उतरना है ही। Maybe that is why it is untouched. I would not say untouched but raw, and it is like a paradise. Not many people like visiting here. Yes, we are going to that place now. It is so interesting. बस थोड़ा ही उतरना है। उतरने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं लगता, बट चढ़ने के टाइम पे हालत हो जाएगी। So guys, this is a no swim zone. You cannot swim here, and this is so beautiful. This is very beautiful. As it is high tide, the water is coming all till behind.
Hi guys, we are at the Galji Baga beach now. This is the Galji Baga beach. And this also has white sands. There is nobody on the beach, literally nobody. It's just me on the beach. And you can see how peaceful and calm this beach is. Let me show you. This is a common mountain which we are looking at in each and every beach. So even this one on the either sides, remember I shown you the mountains on Agonda beach as well. There are no shacks here on this beach and it is really calm. You will have mountain view here, you will have the soothing sound of the waves, and you will also find turtle hatching during the season. This is not the season for turtle hatching, but in the turtle hatching season you will definitely be able to, during the Jan and February month, you will be able to see the turtle hatching if you are fortunate enough, because that is when it's showing in Google for turtle hatching. But right now all you can find here is just a calm and peaceful beach, and it's still sunny, so there is nothing much to do here otherwise, but it's the cleanest beach. If you just look around, on other beaches you will still find some of the other bottles littered around, or maybe some wrappers thrown here and there, but on Galji Baga beach there is nothing at all, no garbage at all. But now, as you know, this beach, don't just come here and litter things around, but spread the message of cleanliness is also maintained it yourself. And this is the Galji Baga beach, the cleanest beach I have ever seen, as in not just Goa, but the cleanest beach I have ever seen. It is very, very clean. So here is some information on the turtle hatching which I was just speaking about. Goa Forest Department, Wildlife and Ecotourism Division, South Goa Marine Range. If you want to read this, you can definitely read it by going through all the information. Just pause and read the information. Here also there is a little information displayed about the Wildlife and Ecotourism Division. This is lovely information given here. This is an entire life cycle of a sea turtle mentioned here. Protect marine life.
this project is really beautiful. The thought is beautiful, the work is beautiful, really very lovely. I'm not sure which trees are these on this beach, but if you are aware, you can definitely comment and let me know which trees are these. These huge tall trees. I know one of the huge tall trees which we find in Ooty, Mahabaleshwar, which are known as silver oak, but I'm not sure if these are those. If any one of you are aware which trees are these, then please do let me know in the comment section, and let all the viewers also know in the comment section. सो वेल गाइज, ये वो ड्रेस है जो मैंने कल ली थी ताकि हम आज साउथ गोवा की नाइट लाइफ देख सके, पलोलम में जाके सिर्फ बीच शैक्स वाली नाइट लाइफ। और अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको पटनम बीच भी दिखाऊंगी, विच इज़ क्वाइट क्लोज। सो टुडे बीइंग आवर लास्ट डे एट गोवा एज इन साउथ गोवा, लेट्स मेक इट हैपनिंग। सो लेट्स गो। गोवा जाने का सीज़न है और आप डेफ़िनेटली गोवा की बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ढूंढ रहे होंगे जहाँ पर आपको कम क्राउड मिले और ज़्यादा मज़ा आए। तो आपको वो सारे एपिसोड्स इन प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे जो इस वक्त मेरे स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये एपिसोड्स देखना बिल्कुल मिस ना करें।